Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hello friends. So in this class, in this session, we discuss about the questions which are come in our OSSTET 2023 examination. तो এই জায়গায় এই সেশনরে আমি जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और स्कूल मैनेजमेंट एंड इवालुएशन पार्ट रे जो 50 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीथिला हम ओएसएसटीटी एग्जाम रे से एग्जाम रो क्वेश्चन को हमें एनालिसिस करिवु केवल आंसर हमें दबु नाही एठी एनालिसिस करिवु तो एई एनालिसिसटा जे केवल आंसर फाइंड आउट करिबा एई क्वेश्चन सेट रो ता नुह आगु को जते बेले विभिन्न एग्जामिनेशन आसीबो से पॉइंट ऑफ व्यू रे भी वेरी इंपोर्टेंट काहे ना हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करिबा जे सेई रिलेटेड जदि इन फ्यूचर किछि क्वेश्चन आसे देन दैट इज वेरी इजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ ओएसएसटीटी एग्जामिनेशन 2023 द फर्स्ट क्वेश्चन तो आमे कोनोसी सेट को आमे एठी एप्रोप्रिएटली रखि नाहंती क्वेश्चन को रखिचंती तो क्वेश्चन बेस रे आमे आंसर खोजि दबा आ देखि दबा हम निज निज सेट रे कोन को क्वेश्चन ले कोन नंबर क्वेश्चन ले कोन क्वेश्चन टे अछि The first question, that is TLM should be selected according to the availability TLM select करा जिवो को प्रोसेस रे बा को वे रे the availability in respect of areas respective areas, then the objective of learning, their cost and none of the above. तो ये चारिटा ऑप्शन रु मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तुम माने भाबी परथुबो that is answer A. तो when we select the TLMs then we generally focus the availability इन रेस्पेक्टिव एरिया आम सराउंडिंग रे जो सब जिंस अछि ताकू यूज करी कि नो कॉस्ट और लो कॉस्ट मटेरियल हम टीएलएम करी कि हम पिलां को पाखरे पहुंचेबा आउ तांको लाइफ सहित रिलेटेड जिंस गुडा को जते बेला हम टीएलएम रे नै कि पहुंचू से तांको पई से सब जिंस गुडा कोन हुए ना वेरी इंटरेस्टिंग हुए ड्यू टू दैट द आंसर इज ए देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस एज एन आउटकम ऑफ डेस inborn capacity, training in grammar, imitation and reinforcement, maturity. तो जनरली क्वेश्चन को आमे देखिबा मात्रे आम माइंड को आस जीवो कोन ना imitation and reinforcement. Yes, but the right answer is inborn capacity. तो बीएफ स्किनर कर जो लैंग्वेज थ्योरी अछि से थ्योरी को आमे जो देखिबा बीएफ स्किनर फेवर द नर्चर साइड ऑफ द डिबेट ओके जते बेले आमे गोटे लैंग्वेज डेवलपमेंट कांसेप्ट रे कहू डिस्कशन करू आ बीएफ स्किनर कर कांसेप्ट जते बेले हमें डिस्कशन करू सेते बेले देखू से नर्चर ऊपर फोकस करथिले जते बेले चॉम्स्की कथा कहबा से बोथ नर्चर आ नेचर ऊपर तांकर डिस्कशन थिला किंतु बीएफ स्किनर कर कांसेप्ट कहा ऊपर फोकस हितला ना नर्चर ऊपर ही बिलीव्ड दैट चाइल्ड्स एनवायरनमेंट प्लेज ए ह्यूज रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड दैट इज द एबिलिटी टू एक्वायर ए लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग The debate is ongoing and inconclusive. Okay, ये जो debate टा language रे जो हम child रो जो language development होची ता environment रू ही influence रे होची केवल बा सही process रे कौन nature और nurture रू होची एटा inconclusive debate ए पर्यंत. And however it does appears the ability to attain a language influenced by both nature and nurture, there can be a genetic blueprint for the language that set humans apart from other creatures जोटा कि स्किनर एडवोकेट करथिले जे we are the human being, we are special human being because we use languages for the communication purpose. Specialized language structure can be justify these arguments in the brain. However, the ability to use actual sounds, words, syntax and grammar is sometimes child's learn from their environment किछि मात्रा रे ये करे किंतु इनबॉर्न क्वालिटी बोली बीएफ स्किनर को कांसेप्ट रे हमें एठी देखिबा ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड सोलोमन स्ट्रामिंग इज द मेनली ड्यू टू स्ट्रामिंग ए जो थंगेई हबा कथा रही रही कहिबा सेटा कहा पई होउची तो विभिन्न प्रकार आंसर तो माइंड को आसुथुबो The most appropriate answer, that is emotional tension as observed in excessive fear. That is the right answer. कारण एटा जॉनसन आउ सलमान करो कांसेप्ट रु ही पचारिची
अदर कॉन्सेप्ट रे थिले अलग कथा हितांता अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड सोलोमन द अदर स्टैमरिंग is mainly due to emotional tension as observed in excessive fear. It is however observed even in the absence of emotional tension also. The causes in such a situation being sense of insecurity and maladjustment. According to some psychologists, stammering is because of lack of balance among the two hemisphere of brain. Okay, two hemisphere of brain ro bibhinno psychologist कहइछथि, but Johnson and Solomon तांको concept रे emotional tension and as observed in excessive fear, that is the right answer according to Johnson and Solomon. Okay, then come to the next question. From the following list of methods of teaching, identify those which are learner centered. कोन गुडा learner centered बोली हमें कहिबा, तो जेमिति कि एडी ऑप्शन रु हमें काटिबा कथा चिंता करिया, तापर हमें डिस्कशन को जीवा. तो प्रोजेक्ट मेथड टिके कंफ्यूजन मन भितर आस्थुबो. चॉक एंड टॉक मेथड एटा केबे भी लर्नर सेंटर्ड मेथड नुहे. लेक्चर एंड ऑडियो विजुअल मेथड दैट इज नॉट ए लर्नर सेंटर्ड मेथड, कारण लेक्चर मेथड आसुची, चॉक एंड टॉक मेथड आसुची, दीज आर नॉट लर्नर सेंटर्ड मेथड. तो आई टू आई जो ऑप्शन ले अछि से ऑप्शन केबे होबो नाही. आई टू आई थ्री आई एटा तो केबे होबार नाही. टू आई आउ थ्री आई, तो एठी भी टू आई थ्री आई अछि, एठी भी थ्री आई अछि, तो दैट इज द ऑप्शन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन एंड सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग. In these two process, students are actively involved in the process of learning. Okay, so these are the two right answers for learner centered approach. Okay, then come to the next question. Which is the period for acquiring experience of social subordination to authority figure outside the family? तो केते बेले आमे जो authority figure हिसाब रे आम निजु को outside family रु जाई कि आमे आम निजु को रिप्रेजेंट करू, दैट द आंसर इज एडोलेसेंस. से एडोलेसेंस पीरियड रे ही ए कामटी हुए. देन द स्टेटमेंट इन ए मल्टीपल चॉइस टाइप आइटम्स इज नोन एज. तो जो मल्टीपल चॉइस आइटम रे जो हमर ऑप्शंस पूर्व जो गुटे स्टेटमेंट बा इंस्ट्रक्शन दिया हिताय, से इंस्ट्रक्शन टा जोटा दिया हिची से इंस्ट्रक्शन को कोन कहै जाय, दैट इज स्टेम. ओके, दैट इज स्टेम. तो देखिबा a multiple choice questions composed of two parts, a stem that identify the questions or problem and a set of alternatives or possible answers that contains a key that is the best answer to the questions. Okay, तो दीटा पार्ट रहिबो, गुटे स्टेम रहिबो आ गुटे अल्टरनेटिव्स रहिबो. तो स्टेम पार्टटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइटम्स रु ही थाय. Then the next question, who was the first to use multiple choice item for assessment in 1915? Okay, J.F. Kelly, that is the right answer. J.F. Kelly, he is also considered as a father of multiple choice test item. The father of multiple choice testing was one Frederick J. Kelly, author of the Kansas silent reading test. Okay, Kansas silent reading test in 1914. Kelly devices, okay, ए टेस्ट रे यूज करले से मल्टीपल चॉइस 1915 रे, ए टेस्ट ता से बाहर करथिल 1914 रे. Kelly devices a system that he believed would be subjectivity out of testing and create an efficient means of guiding students reading ability. Okay, तो एथि पई से मल्टीपल चॉइस टेस्ट आइटम को बाहर करथिले आ जोटा कि आज का डेट रे we use in a vast manner. Then the next question, which of the following is the characteristics of critical pedagogy? तो critical pedagogy रो को characteristics मोर लास्ट वीडियो जो critical pedagogy रो जो माने देखिथिबे से माने निश्चित भाबरे ए पॉइंट गुडा को मने रखिथिबे. तो ता परे भी मोस्ट इंपोर्टेंट characteristics of critical pedagogy 8टा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि, से 8टा पॉइंट को हमें मन रखिबा आगु को भी. तो critical theory, then pedagogy as a moral and political practice, then the neutrality of knowledge, democracy and social justice, concientization, then language and power, then oppression and liberations, then culturally sustaining pedagogy. So these are the most important characteristics of critical pedagogy. तो या भितरु देखिबा हमें सब पॉइंट गुडा अछि. So the answer is all of the above. The answer is all of the above. Okay, then come to the next point. A percentage based method for awarding
grading is known as, तो आमे जतबेले ग्रेडिंग कथा आसे परसेंटेज रु बाहर ठीक अछि यस आमे गोटे परसेंटेज रे कन्वर्ट करले जाय कि ताको ग्रेड सिस्टम रे पकई परिबा ए कि कोन ए सब जिंस पकई परिबा किंतु एक क्वेश्चन से कहूची परसेंटेज बेस्ड मेथड ओके बेस्ड मेथड फॉर अवार्डिंग ग्रेडिंग इज नोन एज रिलेटिव ग्रेडिंग क्लियर देखि दबा एटी कोन होउची तो relative grading or a norm reference grading is the process of assigning letter grades to the students on the basis of ranking of them on their relative level of achievements in a particular group. Okay. For this method of grading, a decision is made in advance about approximately what percentage or proportion of the student would be awarded of a particular letter grade on the basis of developing valid grading of their relative परफॉर्मेंस तो सेति पई जेहेतु से परफॉर्मेंस बेस्ड जो हमर परसेंटेज बेस्ड मेथड रे अवार्ड करिया कथा ग्रेडिंग कथा कहूची तो एटी आंसर आसीबो हमर रिलेटिव ग्रेडिंग ओके तो आंसर इज बी देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस a method which an organization collects maintain and report information on peoples and jobs. The process of integrating the employees' needs and aspirations which organizational need. The process of bringing people and organization together so that the goals of each are achieved. The efforts to make life worthy living for workers. Okay. तो जेहेतु यही कथा से कहूँ the method which an organization collect, maintain, and report information on the people and jobs. तो एटा किछि मात्रा रे ही पारे किछि मात्रा रे हमें कहि परिबा that answer is right but we select the most appropriate or most right answer so that one is answer C okay so the process of bringing people and organization together so the goal of each are achieved तो both जो organization आउ individual both development हेई परिबो तो सही कथा को एटी बेस करिके आंसर टी दिया हेची C then the next question is Pavlov's experiment with whom led to the discovery of new principle that revolutionized thinking in social science dog आमे एटा जानि चंती पावलोव को एक्सपेरिमेंट रे से डॉग को यूज करथिले काहेकि से प्रथम थर डॉग को ही आइडेंटिफाई करथिले सलाइवेट करिया पई सलाइवेट कर माने करूथुवा बेले जेतबे खाद्य आस्तुला ड्यू टू दैट द आंसर इज dog then the next question the intelligence that is occupied with objects and things is concrete intelligence तो जो जिंस गुडा आमे ऑब्जेक्ट बा थिंग्स कथा कहउचंती these things are perceivable we can see these objects we can touch these objects we can feel these objects so these are the concrete intelligence तो abstract जोटा आसीबो सेटा तो हमर रहिला जो बा आमे कहि परिबा कंक्रीट इंटेलिजेंस टाइप मोर जे इंटेलिजेंस क्लास करथिबो से कंक्रीट इंटेलिजेंस को भलो भाबरे बुझतु जो माने ऑब्जेक्ट और आर्टिकल्स ऊपर तांकर मास्टरी थाए सेही भलिया इंटेलिजेंस जो सेही भलिया इंडिविजुअल को पाखरे कंक्रीट इंटेलिजेंस थाए जो माने वर्ड लैंग्वेज ए सब ऊपर जहार मास्टरी थाए तांको पाखरे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस थाए सोशल इंटेलिजेंस की कहा पाखरे थाए जो माने गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करि पारंती these individuals have social intelligence so our answer is B then scales having equal differences between successive categories refers to ordinal scale nominal scale ratio scale and interval scale तो आंसर बेले बेले रेशियो स्केल मन को आसी जाउथबो बट द राइट आंसर इज इंटरवल स्केल देखिबा कोन राइट आंसर तो फर्स्ट आसला नॉमिनल स्केल जोठी हमें नंबर को यूज करू the nominal scale is the first level of measurement scale in which the numbers serves as a tags or labels to classify or identify the objects तो number को use करा होची the nominal scale usually deals with the non numeric variables or the numbers that do not have any value then next one is the ordinal scale it is the second level of measurement जोठी हमें यूज करूचंती that reports that ordering and ranking the data ordering or ranking करके data को हमें ताको बुझिबा बा ताको मेजर करिबा data without establishing the degree of variations between them ordinal represents the order ordinal data is known as qualitative data or categorical data it can be grouped named and also ranked group करियो named देई कि ताको
असेंडिंग की डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाई परिबा और रैंक देकी भी ताको हमें अरेंज करि परिबा. Then the next one is interval scale. It is the third level of measurement scale. It defines the quantitative measurement scale in which difference between two variables is meaningful. So it is a good difference between successive categories refers to. So that is the meaningful for our answer. And in this word, the variables are measured in an exact manner, not in a relative way in which the presence of zero is arbitrary. Okay. तो एठी आमे डिफरेंस टाकू बहुत माइन्यूटली जज करू. तो सेहिति पई एई आंसर टाकू आमे देखिले एठी कोन ना इंटरवल स्केल. तो आउ गोटे स्केल भी आमे डिस्कशन कर दबा रेशियो स्केल. द रेशियो स्केल इज द फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट scale which is quantitative. It is the type of variable measurement scale. It allows researcher to compare the difference of intervals. The ratio scale has a unique feature. It possesses the characters of origin or 0 point. तो 0 point मैंने मन रखिबा रेशियो स्केल ले 0 point कोठी नाही इंटरवल स्केल किंतु डिफरेंस टाकू आमे जज करू इंटरवल स्केल ले. सो आवर राइट आंसर इज डी. Then which of the following type of learning materials are in the form of real object or ideals that make the concept very clear? Okay, so real object au ideals kountu dekhiba in our surrounding environment. The answer is surrounding environment. Okay. Then the next one is audio visual aids make learning easy, yes, interesting, yes, effective, yes. So our answer is D. All of these. Okay. Then at which age a child can understand similarities and distinction between words? Okay. तो एई आंसर टाकू जते बेले हमें भाग्यस्की कर लैंग्वेज डेवलपमेंट रे देखिबा बा विभिन्न लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस रे देखिबा मेनली भाग्यस्की कर तो सेठी तमे पाइबो जे अप टू 6 इयर्स पर माने बेलुकू गोटे पिलार 6000 टू 18000 वर्ड डेवलपमेंट हो जाए. जब एत गुड़ा वर्ड डेवलप हो जाऊँगी तो आम निश्चित ये भाविबा जे से सिमिलारिटीज और डिस्टिंक्शन किछि मात्रा रे करि परिबो जोटा कि से एई स्टेज रे हेई परिबो बोली आमे कहि परिबो. तापर स्टेज रे तो हबो एडोलेसेंस रे भी हबो 9 to 10 स्टेज रे भी हबो बट इट स्टार्टेड फ्रॉम द 5 to 6 years. In a learning centric approach, a teacher should clarify concept by citing examples, facilitate student learning, then explaining concept by using adequate support materials, demonstrate inside the classroom. तो clarify concept माने एटा टीचर निजे करूचंती, explain concept माने टीचर explain करूचंती, demonstrate करूचंती माने टीचर demonstrate करूचंती. But the right answer is facilitate student learning. Student एई जगह रे कोन करिवो ना टीचर देइथिबा फैसिलिटीज को यूज करिवो और लर्न करिवो. So our answer is option B for this question. Okay. Then come to the next question. Creative learning is based on transfer of principle and skills, discover principles and concept, memorizing facts and principle, mechanical reproduction. Okay. So here the answer is discover principle and concept. काहे कि ना मुझे तो creatively learn करूची then सेटा within माने myself होची जोटा construct होची मो भितरे तो से जगह रे एई केसटा ही सैटिस्फाई करिवो आउ सब केस गुडा डिपेंडेंट केस बोली हमें कहि परिबा. ठीक अछि. सो द आंसर इज बी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रपोज दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD मोर जे चम्स्की कर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी मु जो पढैतिली सीटी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को भलो भाबरे डिस्कशन मु करथिली जे दैट इज अ फैकल्टी ऑफ आवर माइंड. आम माइंड रो गोटे फैकल्टी जो फैकल्टी टा कौन करे लैंग्वेज डेवलपमेंट करिवारे हमको हेल्प करे. तो द आंसर इज चम्स्की. दैट इज द राइट आंसर जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रो कांसेप्ट से देइथिले. आउ कोन कोन कांसेप्ट देइथिले ना बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट आउ विभिन्न प्रकार देइथिले. जदि जहारो एठी डाउट रहिछि जाई कि मोर जो आगो वीडियो गुडा को भी देखि परिबो जोटी कि चम्स्की कर लैंग्वेज डेवलपमेंट रो कथा सिटी अछि देखिले या बाबद रे पूरा क्लैरिफिकेशन हे जिवो. ओके. देन TLM should be used to make teaching more useful, make teaching impressive, provide concrete example, facilitate learning. तो TLM को हमें काहे की यूज करिबा only to facilitate learning. Okay.
ए सब कथा ठीक अछि बट among these the most appropriate answer is facilitate learning. Through TLM we provide different facilities to the learner to learn. Due to that TLM should be used to facilitate the learning. किंतु एई गुडा सब ठीक अछि मु कहिबिन जे भूल अछि but the most appropriate among four that is facilitate learning. So our right answer is D. Then which of the following is not true in the context of teaching learning materials? तो आमे देखिबा जे कोटा not true teaching learning materials base रे कोटा not true. A blackboard can be used for putting the cutouts of newspapers and magazines. केबे blackboard रे आमे magazine को और newspaper cutout को put करंती की करंती नाही. So that is the right answer. Not true. Our teaching can be effective through the use of audio visual aids. Yes, that is also true. It is not true goichi kintu eta true. Audio visual aids help comprehend difficulties and monotonous context. Yes, help kare amku. Textbook are the one of the most main TLM used in the classroom. Yes, textbook is also considered as a TLM kaରଣ ସେଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ टीचर ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ but ଏ जो blackboard can be used for putting and cutouts of newspaper and magazines. Blackboard रे हमें newspaper और magazines को put करunti nahi. तो our answer is option A. Then the next one is formulating general principles based on knowledge of examples and detail is known as. तो हमरो general principle को formulate करिवा from the examples. तो हमें एठी example जो गुडा अछि these are the specific concept. तो हमें जीवा general. तो specific को general जीवा पई को मेथड टा हमको हेल्पफुल हुए ना inductive method. So that is our right answer D. Then the next question, according to Kurt Lewin's which theory of adolescence experience a rapid widening life space along geographic, social, future and future time dimensions. So that is the field theory. Focal theory भी तांकर अछि, grand theory भी अछि, psychoanalytic theory तो नुहे. तो आमे एठी देखिबा कोन तो एई जो एडोलेसेंट ऊपर जो कांसेप्ट ऊपर से देई जति थ्योरीटा that theory is your field theory. So answer is option A. Then the next question, the process by which an organism acquires a new mode of behavior which tends to persist and affect the general behavior pattern of an organism to some degree is known as learning. Okay. तो से कहूची कोन the process by which an organism acquires new mode of behavior which tends to persist or affect the general behavior. तमर जो general behavior अछि तमे किछि नुवा कथा सिखिला परे से जनरल बिहेवियर को मॉडिफिकेशन हमें कर दियंती. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग प्रोसेस. देन ऑप्शन इज बी 24. द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर इज वैलिडिटी. रिलायबिलिटी रे कंसिस्टेंसी मेंटेन होबो. कंसिस्टेंसी को मेंटेन करबा हमें. तो आज जो टेस्ट हमें पकेइलु जितकी रिजल्ट पाइलु जो स्कोर पाइलु आमे उटे टाइम पीरियड पर अगेन पुट दैट पर्टिकुलर टेस्ट अमंग द पर्टिकुलर स्टूडेंट देन आल्सो यू गेट सेम रिजल्ट जोटा कि आगुरु तमे पाइथिलो सेम टाइप रो रिजल्ट दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. तो रिलायबिलिटी तो वैलिडिटी रे कोन होबो जोटा आमे मेजर करिया पई चाहू सेटा जदी पर्टिकुलरली मेजर करि परलु आमे तो दैट क्वेश्चन इज वैलिड क्वेश्चन. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी ए नुहे. National Staff College for Educational Planners and Administrators started in 1973 by the Government of India. जोटा कि 73 रे हितिला जोटा को हमें न्यूपा बोली कहउतलु. ओके ताको हमें न्यूपा बोली कहउतलु. से कॉलेज टा एई पर्पस रे हितिला एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग पर्पस रे. न्यूपा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रीस्ट्रेचेड एज इन 19 पुनी थरे अगेन रीएस्टैब्लिश हला रीनेम्ड हला. तो से जो 1979 रे निपा हितिला. ओके आउ कोनोसी गुडा 1979 रे एस्टैब्लिश हिनी एक्सेप्ट निपा. निपा 1979 रे रीनेम्ड हितिला न्यूपा रु निपा हितिला. ओके सो द आंसर इज डी. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ मेजरिंग रिटेंशन. तो कोनटा रिटेंशन को मेजर करिवार प्रोसेस नुहे नॉट द वे ऑफ मेजरिंग रिटेंशन. आमे रिकॉल करि परचंती रिटेंशन को मेजर करचंती. आमे रीलर्निंग करि परचंती रिटेंशन को मेजर करचंती. रिकॉग्निशन करि परचंती रिटेंशन को मेजर करचंती. बट कंस्ट्रक्शन
रे रिटर्नसन लो किछि कांसेप्ट रे कथा नाही कारण वी कंस्ट्रक्ट द नॉलेज विद इन आवर सेल्फ्स आमे मने रिटेंशन कोन अछि कोन नाही ता ऊपर बेसी इंपोर्टेंस आमे दियंतिनी ड्यू टू दैट आवर आंसर इज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ओके देन व्हाट वाज अल्फ्रेड बिनेट्स थ्योरी तो अल्फ्रेड बिनेट करो थ्योरी आमे जानि छथि तो इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड बाय द कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम आइडिया नुहे केबे से बाबदर कांसेप्ट सेमति के देई नांती गिफ्टेड चिल्ड्रन कथा को हम भूली जिवा सेठी किछि दरकार नाही पीपल आर नॉट बोर्न विथ ऑल द इंटेलिजेंस ए कथा को भी आमे कहि परिबानी कारण इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट but the differentiation of human intelligence into specific modalities of intelligence rather than defining intelligence as a single or general ability that concept is known as unifactor theory of intelligence जोटा किए देइथिले ना बिनेट देइथिले तो एई कांसेप्ट राइट आंसर बिकॉज दैट कांसेप्ट इज considered as unifactor theory or G factor theory आमे कहि परिबा जनरल फैक्टर थ्योरी तो से कांसेप्ट किए देइथिले अल्फ्रेड बिनेट देइथिले ड्यू टू दैट ऑप्शन इज करेक्ट who said that intelligence is general was the power of good responses from the point of view of truth or fact तो ए कांसेप्ट किए देइथिले इंटेलिजेंस रो ए कांसेप्ट किए देइथिले ना थ्रॉन्डाइक ओके ए कांसेप्ट कहारो Now, intelligence is the general was the power of good responses from the point of view of truth and or fact. The answer is Thorndike. Then the next question: who is author of Animal Learning? Animal Learning, जोटा कि 1898 रे लिखिथिले, publish हेतिला. Answer is again E.L. Thorndike. Then basic managerial functions of human resource management are planning, organizing, staffing, planning, organizing and coordinating, planning, organizing, directing and controlling, none of the above. तो आंसर इज आवर सी तो जते बेले आमे गुटे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रो बेसिक मैनेजरियल फंक्शन देखिबा इट हैज 4 फंक्शंस ओके तो 4 फंक्शंस मन रखिबा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ओके सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी The next question, constructivism is a learning theory based on developmental psychology, evolutionary psychology, cognitive psychology, occupational psychology. तो constructivism जेतले construct होउची आम knowledge टा generally knowledges are constructed within the cognitive faculty. So our answer is cognitive psychology. Okay. Then which theory of motivation holds that the secret of mind are locked within the cells of नर्भस सिस्टम तो एठी आमे केते गुडा थ्योरी रो कांसेप्ट देखिबा फास्ट आसला पॉन थ्योरी तो पॉन थ्योरी रे कोन अछि जो मोटिवेशन आमे करिबा मोटिवेशन कला पर जहा को मोटिवेट करूचंती दैट इंडिविजुअल बिकम ए पपेट हिसाब रे से काम करिवो आफ्टर मोटिवेशन ए पॉन थ्योरी सेही कांसेप्ट को डिस्कशन करे देन स्टिमुलेशन थ्योरी कोन कहूची सी ना प्रॉपर इनर एंड आउटर स्टिमुली बेस रे आमे मोटिवेट करिबा तो एटा हला स्टिमुलेशन थ्योरी रो कांसेप्ट देन डेप्थ थ्योरी रो कांसेप्ट कोन आसिला डेप्थ थ्योरी के देथिले ना फ्रॉड देथिले सिगमंड फ्रॉड देथिले डेप्थ थ्योरी तो तांको कांसेप्ट रे ए जो अनकॉन्शियस लेवल ले आमे जो काम करूचंती सेही कांसेप्ट रे जो मोटिवेशन आम पाकु आसु अनकॉन्शियस लेवल ले तो सेही मोटिवेशन टाकू से डेप्थ थ्योरी रे रखिथिले तांको मोटिवेशन ले बट द आंसर इज साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट इज द राइट आंसर डी साइकोलॉजिकल थ्योरी द नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल इज कॉल्ड तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए सिंगल क्लास तो गोटे पर्टिकुलर क्लास पई हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तैयारी करछुंती तो सेही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टा केते दूर व्हाट एक्सटेंट केते दूर सेटा अचीव हेई गलानी दैट शुड बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ असेसमेंट ओके असेसमेंट देन डेस मींस
something that can be used to help achieve an aim. ओके जो जिनसटा हमको हेल्प करे आम एम को अचीव करिया पई दैट इज कॉल्ड आवर रिसोर्सेस आम सराउंडिंग रे हो बा हमर जो जो रिसोर्सेस को यूज करी कि आम एम पाखु को जाउचंती दैट कांसेप्ट बा सही कांसेप्टटा हमको एम रे पहुंचिया पई जे हेल्प करे दैट इज कॉल्ड आवर रिसोर्सेस. The next question, according to Chomsky, human have a dash to develop language. Okay, perpetual set, telegraphic readiness, learning set केबे भी नुहे मो थियोरी जो थिला से कांसेप्ट जे पढिथिबो निश्चित भाबरे एठी बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन रो कांसेप्ट मु से डिस्कशन करथिली. तो दैट इज द राइट आंसर. लैंग्वेज डेवलपमेंट पई बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन इज अ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट. Then which of the following is an important characteristics commonly found in effective school administration at primary level? तो प्राइमरी लेवल ले जो स्कूल मैनेजमेंट करा जाए एडमिनिस्ट्रेशन जे करंती सेमान को पाखरे को भलिया क्वालिटी रहबा दरकार बा कैरेक्टरिस्टिक्स रहबा दरकार लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. सो द आंसर इज बी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. क्लियर. Then the next question, the evaluation in which variety of techniques are used to measure scholastic and non-scholastic area of the pupils is known as continuous evaluation. Evaluation always continuous. तमे जे evaluation को adopt करछो सब evaluation continuous process रे ही जीवो. Placement नुहे केबे भी scholastic और non-scholastic रे placement नुहे. Diagnostic भी केबे होबो नहीं but comprehensive evaluation टा होबो काहे कि ना आमे जतले बोथ एरिया को कवर करिया कथा चिंता करूचंती थ्रू इवैल्यूएशन देन दैट इज ए वास्ट एरिया. सो इफ वी कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर बोथ द एरिया देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द एक्चुअल मेजरमेंट और द एक्चुअल जजमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल. सो आवर आंसर इज कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. देन द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रेफर टू पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो अगेंस्ट रे कोनटा इनकरेक्ट बोली हमें देखिबा. Students get opportunity to exhibit their own talent. Okay, it makes learner more self-reflective. Both teacher and student collaborate in evaluating on student progress. It is a tool that clarifies, indicates marking criteria. Okay, clarify indicates marking criteria. तो से incorrect कहिजी ता माने निश्चित भाव में marking criteria कथा नुहे. Portfolio that is a systematic collection of student work that represents students activity, accomplishments and achievements over a specific period of time. तो एटी मार्किंग प्रोसेस रे किछि पोर्टफोलियो तयारी करा जाय नाही. सो पोर्टफोलियो टू टाइप्स मन रखिबा हमें. शो केस पोर्टफोलियो जोटी कोन रहइबो ना दैट इज ए शो केस भलिया जिंसटे रहइबो जोटी सजाडी हेई कि हमें पिलांकर विभिन्न अचीवमेंट्स हो विभिन्न कथा को हमें सिटी रखिबा. तो स्टूडेंट सिलेक्ट एंड सबमिट देयर बेस्ट वर्क. द शो केस पोर्टफोलियो एम्फसाइज द प्रोडक्ट एंड लर्निंग. तो बेस्ट वर्क को आमे सजेई की रखंती आम घरे जेमिति शो केस अछि आम भलो भलो जिंस रखंती बेस्ट जिंस रखंती सिमिलरली शो केस पोर्टफोलियो रे बेस्ट वर्क को आमे रखिबा. देन द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो. स्टूडेंट सिलेक्ट एंड सबमिट प्रिसाइज ऑफ वर्क एंड कैन शो एविडेंसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ और चैलेंज ओवर टाइम. द ग्रोथ पोर्टफोलियो एम्फसाइज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो हमरो आंसरटा एटा ही निश्चित होबो काहे कि ना मार्किंग क्राइटेरिया को सेटी किछि इंडिकेट करे नहीं portfolio. Then TLM should be used by teacher as it कौन पाई TLM को टीचर यूज करे. इट इज वेरी एक्सपेंसिव नुहे समिति नहीं नो कॉस्ट लो कॉस्ट मटेरियल भी हमें TLM यूज करचोंती. देन मोटिवेट्स लर्नर्स फॉर फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल्स एट होम ना. सपोर्ट सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. यस एई जो TLM कौन करे हमकु टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को से कौन करे ना सप्लीमेंट दिए हेल्प करे. ओके आमे केते भलो भाबरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगु को नै परिबा सेतरे से हेल्प करे. ड्यू टू दैट इज ए सप्लीमेंट्स टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली टू सिट इन द क्लास. एटा तो केबे होबो नाही. सो आवर आंसर इज आंसर ऑप्शन सी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल यूज्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. तो रावन्स प्रोग्रेसिव टेस्ट मैट्रिसेस जोटा सेटा ग्रुप टेस्टिंग ऊपर हमर कथा जाय. Then Jalota scales of intelligence, that is also a group, but Stanford Binet test, that is a individual testing procedure by which we can measure the intelligence of individuals. Okay, so Stanford Binet test is the right answer.
Then constructivist approach suggested that dash is crucial for constructing knowledge. कोउ कथाटा आमर knowledge construction पई very essential. तो आमे पछवाडू जिबा रूट मेमोराइजेशन केबे नुहे पनिशमेंट दे कि आमे केबे कंस्ट्रक्ट करि परिबानी कंडीशन देले भी आमे केबे कंस्ट्रक्ट नॉलेज करि परिबा नै बट प्रायर नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज सहित से जते एसिमुलेट करि परिबो इजीली देन एट दैट टाइम दैट इंडिविजुअल कैन कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज सो दैट इज द आंसर prior knowledge of the learner. Then educational management has been defined by G. Tyagi Page, Terry Page and J. B. Thomas. तो कौन कहिथिले एठी मु डायरेक्ट आंसर ता तुमको कहूची कारण एठी आ बुझिबार किछि तो कथा नाही आंसर सी ओके तो जे बी बा जे टेरी पेज एंड जे बी थॉमस से जो एजुकेशनल मैनेजमेंट ऊपर जो डेफिनेशन दिथिले दैट डेफिनेशन इज थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन of existing educational establishment and system ei concept ta kiye deithile na G Terry Page and J B Thomas. Then the next question, a more positive attitude of parents towards school can be derived from enriched dash economic background, cultural background, custom and traditions, so school community partnership. se kon कहूची na positive attitude of parents towards school kete bele hela jete bele ame कम्युनिटी लिंकेज कलु स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप क्रिएट कलु कम्युनिटी को लिंक कलु हम एजुकेशन सिस्टम सहित कारण इकोनॉमिक बैकग्राउंड आगुरु भी थिला कल्चरल हेरिटेज आगुरु भी थिला कस्टम एंड ट्रेडिशन भी थिला किंतु स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप टा नथिला किंतु एबे जेहेतु क्लोज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा होउची ड्यू टू दैट पेरेंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्कूल फॉर नोइंग द डेवलपमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स और चाइल्ड ओके. Then the next question, a progressive teaching philosophy that challenges students to examine power structure and patterns of inequality within the status quo was put forward by a progressive teaching process कथा point आमे जतबेले क्वेश्चन करिबा सेतबेले पूरा क्वेश्चन रे कोन पॉइंट गुडा बा कोन वर्ड गुडा इंपोर्टेंट ताकू आगे आमे सिलेक्ट करिबा तो फास्ट हला प्रोग्रेसिव टीचिंग फिलोसॉफी कथा से कहूची आउ कोन कहूची ना जो पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी कांसेप्ट अछि तो ए कांसेप्ट किए नहीं के आथिले ना पाउल फ्रेडी जे की तुमर क्रिटिकल पेडागोजी रो कांसेप्ट नहीं के आथिले तो जेहेतु से गुटे सेही फैमिली बैकग्राउंड रो आथिले जो फैमिली रो माने जो फैमिली को डोमिनेट करी के रखा होतला सोसाइटी रे तो सेही फैमिली रो से आथिले तो से फील करिसंती बस से जानि जति व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दीज इंडिविजुअल्स दोज हु आर डिप्राइव्ड कैटेगरी ओके तो तांकू डेवलप करिया पई तांकू प्रोग्रेस प्रोसेस रे आनी की तांकू मेन स्ट्रीम को आनिया पई से चेष्टा करथुले तो तांको फिलोसॉफीटा प्रोग्रेसिव टीचिंग फिलोसॉफी रे जाय ड्यू टू दैट आवर आंसर इज पाउल फ्रेडी. Then the next question, Thorndike's which law is of learning is based on the laws of use and disuse. तो laws of exercise ए कथा तो समस्त भलो भाबरे जानि थिबा हमें laws of exercise रे use आउ disuse रो कांसेप्ट अछि. Then the next question, which of the following statement is not an advantages of rubrics? तो rubrics रो कोनटा advantages नुहे not an advantages of rubrics. तो हम एटी देखिबा जे potential to be transferred into grades yes rubrics रे जाय provides a child more control of their own learning process yes rubrics जेतरे गुटे पिला देखिबो तार निजर learning process ऊपर तार कंट्रोल आसीबो. It restricts the students mind power ना rubrics स्टूडेंट रो माइंड पावर को रेस्ट्रिक्ट करे नाही दैट इज द राइट आंसर ओके. देन नैरो द गैप बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट नैरो सरू कर दे गैप टा को रिड्यूस कर दे हमर इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट भितरे rubrics. तो rubrics कोन ना rubrics इज अ स्कोरिंग टूल यूज्ड टू असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन ए साइंटिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया. तो आमे किछि गुटे क्राइटेरिया तयारी करबा आ से क्राइटेरिया अनुसार पिला को जज करबा ये जो क्राइटेरिया तैयारी करके जज करिया प्रोसेस को हमें रुब्रिक्स बोली कहू. रुब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स गुटे हला क्राइटेरिया आ गुटे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया हमें मेंटेन कले पिलार लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कोन अछि तापरे डिस्क्रिप्टर्स जे कि हमें ताकू डिस्क्राइब करिवा पिलार डिटेल कांसेप्ट बाबदरे बा तार लर्निंग प्रोसेस बाबदरे. तो ये हला रुब्रिक्स रो कथा एठी तमे निजे आउटी पढी की क्लियर हेई परिबो. Then the next question, in which of the following test the word premises is associated with? The answer is matching type of test. काहे की
ना मैचिंग टाइप ऑफ टेस्ट रे हमरो दीटा कॉलम थाए ए कॉलम और बी कॉलम यस तो जो ए कॉलम रे जो डाटा थांती ताको हमें प्रेमिसेस बोली कहंती फर्स्ट कॉलम रे डाटा को प्रेमिसेस कहंती और सेकंड कॉलम रो डाटा को रेस्पोंसेस कहंती प्रेमिसेस एंड रेस्पोंसेस सो प्रेमिसेस वर्ड टा एसोसिएटेड विथ मैचिंग फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस then the next question according to whom each reinforcement builds up a reverse of reinforcement that is called Skinner जोटा कि हमें ये जो reinforcement builds up reverse of reinforcement को हमें negative reinforcement भी हमें कहंती ठीक अछि तो that concept was given by Skinner then the last question of this class of this session that is which of the following statement is not related to assessment as learner कोटा लर्नर असेसमेंट रो प्रोसेस नुह ठीक अछि तो ए कांसेप्ट भी आमे मोर असेसमेंट आ इवैल्यूएशन रो दीटा पार्ट रो जो मोर वीडियो अछि तो पार्ट 2 रे एई असेसमेंट एज फॉर ऑफ लर्निंग रो डिटेल कांसेप्ट लिखा हिची तो सही जगह रे ए कांसेप्ट निश्चित भाबरे तमे पाई परिबो तो हमर ऑप्शन कोन आसीबो ना ऑप्शन बी यूज्ड टू असेस द लर्नर वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स एई जो जेहेतु असेसमेंट एज लर्निंग टा ब्रेनस्टॉर्मिंग और सेल्फ असेसमेंट कांसेप्ट को बेसी इंपोर्टेंस दोची तो एनकरेज द स्टूडेंट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग यस एंड आल्सो एनकरेज द पीयर असेसमेंट इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग प्रोसीड्यूर कारण सेल्फ लर्निंग कला बेला हमको पीयर असेसमेंट रो बहुत यूज माने जो दरकार आसे तो एई आंसर टा भी ठीक होबो बट एई आंसर टा एप्रोप्रिएट नुहे तो दैट इज आवर ऑप्शन से कहिची नॉट रिलेटेड तो हम आंसर होबो बी ओके So these are all about your questions which are come in your OSSTT examination 2023. Thank you to all.